stuff you need to talk about that. I hope you understood. For these people, this method is applicable and is gonna go good. Family. Second comes after family comes something called as occupation. If he's a student, then talk about studies. Talk about the college. If he's an employee working some company, then directly talk about the his occupation. How is job going on? All good. If he's self-employed, then talk about his business. How is the business going on? All good. How is the all stuff? If she's a housewife, then talk about her home. Yes or no? What are you doing daily at home? How is your home going on? All good. All the stuffs. Yes or no? That's a common thing. There everybody start with that only. Random don't you start with a thing. That's called occupation. Moving on further with occupation come recreation. Here you're actually introducing him over the platform. Here you're actually creating his mind to do something extra in life, where you're actually hitting his mind that you need to do something extraordinary. आपको कुछ extra करना पड़ेगा. Something extra need to be done from yourself. Then well, something things can become a better way. Right. Assume one thing in this case. Right. जब भी आप recreation करते हो ना, and talk something like that, the people also will go hand by hand. Hand by hand आपसे बात करेगा वो. Example. Now it is the time of like corona pandemic and lockdown and business have been so low and income sources are so bad and you are talking about this. Yes or no? This coronavirus has been a big hard time for everybody now. It's a very hard, difficult time. Will they tell? No. Coronavirus was a good time for us. Will anybody will tell like that? Nobody will tell like that. What you tell, the same thing they'll repeat with you. That's called going hand by hand. Yes or no? Right? If you tell nowadays education colleges like online, nothing they're teaching, but still they're charging money. Will they tell no? Online is good, pay money karke. They also tell the same. Even our kids are like this only. They will talk to you hand by hand. Yes or no? Talk about that, something called recreating. But life is very tough now. Life is very dumb, and a lot of free time we have as a like housewife. But what to do? We have a lot of free time, but we're wasting our time. Yes or no? We are unemployed. Like only one job is very difficult. I have to look for an extra source of income. Yes or no? Like if a person is a self-employed, tell him very difficult is to run the business nowadays. It's so hard and so difficult. After investing money, no guarantee that I can make profit. Student is there. Tell him now. See, studies are so becoming though tougher and tougher now. The difficulty. Talk about something that people can feel. Yes, man, that I need to do something to come out of the situation. Talk about the people problem only, genuine problem. Yes or no? Now he also will tell, yes, that is right. What you're telling is absolutely right here. We are recreating his mind that our life is running into problems. Our life is running into the challenges. But things that just by talking about the problems, we are not going to come out of the problem. Something need to be done. And that is called a message. At last, you're going to give a message to him. That even my life is similar to your life. But the thing is that I'm not just thinking about the problem. I'm actually started working on the solution of the problem. And I'm doing something extra in my life. I started doing something extra. That message you're going to give him. Now he'll be telling, no, you only do, let me not do. He also will tell, what is that? Tell me. Let's do together. That's called the way of inviting people. There you can get together him very well. And so you're talking about the family, about the occupation, then you're talking about the recreation. And then you're talking about something. At last, you're giving a message to him. How to get started. That's something need to be done. I'm already doing it. I'm having an opportunity with me. I hope you can also listen to it. Okay? They will ask you from front. Yes or no, guys? Did you got this method called form method? क्या आप लोगों को पता चल चुका है what is meaning of this method called form method? Did you got this form method? So this is the first method of invitation called as a form method. I hope आपको समझ में आ चुका है. And who to apply? The people who are very long time you have not met him or quite gap is long time and उन लोगों के लिए अच्छी तरह से जाएगा method ये. Yes or no? Right. So recreation is nothing but you are creating his mind so that he can ask you what are you doing to come out of this problem. आप करते क्या हो? So that he can come and ask you what are you doing. So we should put a doubt in his mind. We should actually make him feel the reality. Yes or no? See, nowadays life is very tough. Yes or no? Job is so hard to find a job now. It's not so easy to run the life. You're creating his mind that कुछ extra करना पड़ेगा, something need to do. What they're doing is not enough. Something कुछ करना पड़ेगा यार हमें. They're actually creating his mind to do something extra. That is called recreating. And at last, they're going to give a message that even I'm struggling in life, but you know what?
I'm not just thinking about it. I'm already have a solution for it. I already found a solution and I already started working on it so that I can come out of all these issues and problems. And that is called message you're giving so that the guy can understand that yes, even I need to come out of this problem, that I should do something extra. How this guy is already doing it. That is message nothing but the opportunity what you're going to tell him about that you have an opportunity for you with you. Yes or no? I hope you got this right. आगे बढ़े हम लोग. This is the first method. So moving on further with the second method of invitation. It's called as a PMF card method, or it's called as a dream list card method. I hope everybody knows about this. Yes or no? The dream list card method. Let me just show you one more picture. That will be more good for you. So that आप लोगों को और clarity मिल जाएगा. 1 second. Is the WhatsApp? Yeah, WhatsApp यहाँ पे, media यहाँ पे. तो ये वाला picture आप और clarity मिलेगी आप इसके अंदर. This is called as a form. This is called as a PMF card method. This picture clarity is not there, I guess. 1 second. Yeah, no clarity is there. Guys, this is called as a dream list card method, PMF card method. जहाँ पे आप second method बात करो, this is applicable for those people who are already your good friends, or they are your friends. They you know them well, but you don't know the area of interest. So you don't know what to say so that this guy can become excited or curious. I don't know whether this guy is like what he's want in life. वो चाहता क्या life के अंदर? I'm not aware about that. So that is the moment where you'll be using this card called as a PMF card method. Yes or no? So that to find this area of interest. Yes or no? Somebody is there. Example, this will go good with strangers. Yes or no? A person is there, not in much contact with you, or is completely a stranger for you. Yes or no? And you don't know what he wants in life. What is he actually expecting in life? What he wants, and you're completely unaware about that. And that is the moment where this card will go. This method will go very amazingly. Yes or no? With this card, you have to just ask 5 solid questions. And what are the 5 solid questions? I've already written on the page here. Yes or no? This card with 5 solid questions. Either you can do it online, you can do it over a video calling, or you can do it with a one-to-one, like in person. You can do this. All these things are applicable. You can just go with that. Yes or no, guys? So how to use this card now? See, as I always tell, what you tell doesn't matter. How you tell matters a lot. आप क्या बोलते हो फर्क नहीं पड़ता. कैसे बोलते हो वही उसी से आप रिजल्ट मिलता है. And I already told you the rules, common sense. I told you curiosity, gravity, and all. ये सब सारे चीज आपको rules mind में रखना पड़ता है. I'll give you a common method. Nothing to worry about that. I'll just give you a common method later. Just let me go with the different methods, and at last I'll tell you the common method how to get started with this. Yes or no? Before that, you need to create a proper atmosphere and proper like hype about the platform. Example, I met my friend, which I know him. See, in this like different cases will come where you're inviting this card with a person you already know him or completely stranger. कैसा कैसा हमें invite करना अलग अलग method होता है, ठीक है? Example, I know my friend, but I don't know his area of interest. What I'll tell now? I'll tell him, bro, I want to show you something. I want to show you something from quite long time, but I don't feel that you can do that. मैं लगता like अब ऐसा बोल सकते हो. I want to show you something. I want to show something, but I'm not getting the vibes whether it is the right time to show you or it is not the right time to show you this. क्या बोलेगा बंदा आगे जाना? वो बोलेगा यार कब राइट टाइम तब दिखाना. बोले अभी दिखाओ. ऐसा ना वो खुद आगे से पूछेगा यार दिखा मेरे क्या चीज है. ऐसा ना मैंने क्या बोला आधा बताने का आधा छोड़ देने का. उसको बोलते क्यूरियोसिटी. आई टोल्ड आई एम बहुत मैं सोच रहा था कि आपको कुछ बताऊं. मैं सोच रहा हूँ जब भी आपको बताए का सही टाइम है कि गलत है, क्या बताऊं या ना बताऊं. अब इतना ही बोल दिया. वो क्या बोलेगा बंदा आगे वाला? बोलेगा ना बताना. वो खुद बोलेगा बताना चाहिए. ऐसा ना वो खुद पूछेगा. तब आप दिखाओगे कार्ड. तब आप कार्ड निकालोगे या आप कार्ड दिखाओगे. Then you'll be picking up your card and you'll showing your card. You'll be telling, you know what? Before showing the card, also you'll be getting more gravity about the card. You know what? Everybody is there on the earth. Everybody has certain dreams. Even I know you also have a dream. Even I know I also have a dream. Everybody are running behind today to make their dreams come true. Yes or no? Further they are doing education. Further they are doing so many stuff they are doing. So at least they can get the dreams done. You know what? 99% of people they have a dream.
but their dreams will never come through. Only 1% of people are there who actually makes their dream come through. You know why? Because 99% of people, they just dream, but they never write their dreams, or they never think about how to make this dream happen. Only 1% of the people are there in life who actually thinks about making their dreams come through. You know what? This is my card. These are my dreams, what I want to achieve in my life. तब दिखाओगे कार्ड आप, तब ग्रेविटी बना के कार्ड दिखाओगे आप. Because you are having a card, but your friend don't have a card. Nah, you are trying to put him a word that I belongs to 1% category and you belong to 99% category, where you're telling that you have a dream, but you never wrote a dream. आप वहाँ पे ego हट कर दे बंदे का. That is the moment where you have hurt his ego. You have hurt his ego that you wanted, but you're not doing what you actually wanted. आप चाहते हो कि लाइफ में कुछ बने, मगर आप उसके काम ही नहीं कर रहे हो, आप तो कहाँ से अचीव हो जाएगा? So no, but no, see, I'm actually working on that. These are my cards. These are my dreams, what I wrote. Right. I think your dreams may resemble with my dream. Then the first question आप पूछोगे, what's your first priority in this? आप क्या अचीव करना चाहते हो? क्या आपके लिए बहुत जरूरी है जो आप और which of these things are important to you right now? आप ये ऊपर का जो सवाल है यहाँ पे ना, which of these things is important right now, आप सिर्फ खाली पूछ लेना, वो बंदा खुद पढ़ेगा. फाइनेंशियल फ्रीडम, हेल्पिंग अदर्स, वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, रिटायरमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एक्स्ट्रा इनकम, मोर टाइम फॉर. सर सब कुछ है मेरे को, ऐसा हो ऐसा लगेगा बंदे के अंदर, यार सब कुछ, आई वांट एवरीथिंग ऑफ दिस. राइट, इन दैट यू आर टेलिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट यू राइट नाउ, क्या चाहते हो आप. इन दैट ही may tell you two three things. You may tell, I want extra income also, I want to be an entrepreneur, I want to have more free time or personal development. He will tell his area of interest. In that, if you pick us around 3-4 topics, tell him, now the first question starts. What's your first priority in this? Out of this 4, what you want the most? What's the first priority? वो बोलेगा one thing called extra income. Example is that called extra income. The first question got done. Second question now, rather you telling the importance of it, never tell any important. Make people tell you the importance of it. Second question will be, why did you choose that? क्यों आपने इसे choose किया आपने? क्यों आपके लिए extra income जरूरी है? वो खुद बताएगा आप. Extra income में ये होगा, ऐसा होगा. This is the importance of extra income. There's that everything. He will tell you what you want to tell him. Na, he will tell you the importance now. ऐसा no, where you are right that way. Then the third question, right? Third question, from here the process of recreation is starting, where you are creating his mind that you are not doing anything. ऐसा no. Third question रहेगा हमारा, what are you doing to achieve it apart from your job or studies? What are you doing extra to achieve it apart from your job or study? आप studies के और job के अलावा करते क्या हो ये सारी चीज achieve करने के लिए? Extra income achieve करने करते क्या हो आप? Majority of the people will tell, I do nothing. Or if a person is already into some network marketing, or if a person is already into some other field, he will tell you, along with my job or along with my studies, I do something called YouTubing. I'm a YouTuber, or I do this, I do that. वो खुद बोलेगा. Rather you asking him what you do, he will tell you what he actually doing for that. That is the moment where you'll get to know that he, along with this guy is already involved in something or not. You can cross check that. Majority of the people, they say, I don't know anything. I just play PUBG game, or I play like TikTok or ये वो. उससे कुछ अचीव होगा ना हमें. ऐसा नो, लोग बोलते हैं ऐसा नो, I do nothing. मतलब लोग बोलते हैं nothing, मतलब वो क्या करता है खाली टाइम में? टाइम ही तो वेस्ट कर रहा है, और क्या कर रहा है? ऐसा नो. He could have done a lot of productive thing, but he's actually wasting his time. That was the third question. Now, fourth question is the question which is going to hurt his ego now. And so the fourth question is that, bro, by doing nothing, how can I expect to achieve it? बिना कुछ किए उसके लिए कैसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो सारी चीजें मिल जाएगी? बेवकूफ थोड़ी हो आप. ऐसा no. Without doing anything, how can I expect that this will come through? ऐसा no. Right. That is the moment where he'll be recreating his mind. Yes, man, I should do something for that. And the last question will be asking him, in case if you're not able to achieve it in your entire life, how will you feel? Happy or sad? कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा आपको? क्या बोलेगा बंदा? अच्छा लगेगा, बढ़िया बोलेगा? Of course बोलेगा बुरा लगेगा भाई. ऐसा no, बुरा लगेगा यार. Definitely that guy will put a message that it's going to be very sad, or it's going to be something I've lost in my life. ऐसा no. तब आप बताओगे, you know what, even I don't want to be feeling sad in my upcoming years. You know what, I already wrote my dreams, and no, you know the best part, I already started working on it.
मैंने ऑलरेडी काम चालू कर दिया उसके ऊपर। अब वो क्या बोलेगा? ऑल द बेस्ट बोल के भाग जाएगा बंदा। वो पूछेगा भाई करता क्या है तू, व्हाट आर यू डूइंग, मेरे को तो बता। वो बाय डिफॉल्ट पूछेगा आपको, ऐसा नो। द मोमेंट a person asks you what you do, invitation stops ends over there. Your invitation process is successfully completed. The moment the person asks you what is that, then we need to follow the standard for method is there. From there onward you will carry on with the standard method. ऐसा नो, the moment person asks what is this, उसके बाद क्या करना है मैं बताऊंगा, ऐसा नो। But different methods will help you to ask you, the guy will ask you what is this, जैसे वो artist बोल दिया तो ये picture का काम खत्म, this document, this method is over. Then come the standard general method, वो सिर्फ खाली में repeat करना बार बार। I hope you're getting this, the second method, the dream list card method. Did you got it guys? Did you got this, the second method called as the dream list card method? आपको पता चल गया ये चीज? Yes, thank you so much. So let's move on further with the third method. हम लोग आगे बढ़े। You just right now get the method. I'll tell you the standard method. कैसा हमें implement करना है करके, ठीक है? Moving on further with the method number 3. So this was something called PMF card method. I hope I've explained you well. Next comes the business book method. एक और होता है method called as business books now. Example, if you're a student, now your colleges are about to get reopened now, I guess. Yes or no, the colleges are about to get reopened and you'll be going to class every day, you'll be going to college every day, and in your bag you find something called as textbooks or you find something called as notebooks. Along with that, carry a business book also along with you in that bag. Yes or no? A business books, in a sense, you are like carrying a business books in your bag. What to do? Nothing to do much. Example, which are the business books? ये सारे business books रहते हैं आपके, yes or no? Rich Dad Poor Dad, और आपका आएगा business school आएगा, या one like Be a Network Marketing Millionaire by Deepak Bajaj, or all this stuff, yes or no? Any one book. Simple. What is that? Just go to college, carry the book in your bag, just take out the book, keep on your desk. That's it. और कुछ नहीं करना हमें. You just take out the book, keep on your desk. In the classroom, just keep on a desk, and your neighbor mate will be there, your benchmate will be there. वो क्या बोलेगा? वो चुपचाप बैठा रहेगा, yes or no? He'll definitely put an eye on that. What is this? वो पूछेगा आपको. The guy will definitely ask you, what is this bro? ये क्या चीज है ये? ऐसा वो पूछेगा. That is the reason why Facebook is going good, na? People are more interested in your life rather in their own life. Solely, right? Whether they eat food or not food, they'll definitely watch your status. इतना सारा फालतू का टाइम लोगों के पास है, लोग सबका स्टेटस देखते हैं, पूरा देखते हैं, बार रिपीट करके देखते हैं और मंगाते हैं, वेट प्लीज सेंड इट सो दैट आई कैन पुट ऑन माय स्टेटस। ऐसा ही होता है, ऐसा नो। तो लोग कुछ करे या ना करे, स्टेटस तो पक्का देखेंगे आपका। उसी तरह से उसी लिए तो व्हाट्सएप चल रहा है, उसी लिए तो फेसबुक चल रहा है, उसी लिए तो इंस्टाग्राम चल रहा है। People are more interested in other people's life rather in their own life. They always feel that the grass is greener on the other side rather being the greener on the own side. ये है concept world का, ऐसा no. This is how the people are working on. Simple it is, just take the business book and keep on the desk. That's it. और कुछ नहीं करने का. The guy will ask you, what is this? Then you'll be asking him. I told you, your enthusiasm and excitement plays a big role. You tell him, वो पूछेगा what is this? You don't know about this. आप क्या बोलोगे? You don't know about this. वो बोलेगा I don't know. Then okay, leave. It's not for you. फिर छोड़ दो, आपके लिए है नहीं ये चीज। ये जैसे आप बोलेगा जानते हो ये चीज, क्या है ये चीज, जानते हो इसके बारे में आप? बोलेगा नहीं जानता। देन आपके लिए है ही नहीं चीज। वो क्या बोलेगा? चुपचाप बैठ जाएगा। वो उल्टा और पूछेगा क्या बता तो है, सेम ही अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इट इज, बता तो, ऐसा हो सेम दैट। वो खुद बेक करेगा आपको, ऐसा हो। the moment he asks you what is this, from there the standard method starts. They're just using some tools so that people can ask us करते क्या हो भाई,
करते क्या आप? लोग हमें पूछे, हम लोग इसके लिए ये डिफरेंट मेथड्स है. द मोमेंट अ पर्सन आस्क्स यू व्हाट इज दिस, योर इन्विटेशन स्टॉप फ्रॉम देयर. द जनरल मेथड यू नीड टू जस्ट कंटिन्यू. वो आपको बताऊंगा लास्ट में. Getting or not, guys? So this is the third method called as a business book method. I hope you got this. Or else, one more thing. Now the world has become online, right? You can just take some business books and you can just put on your WhatsApp status or Insta story or Facebook story over there and just type. Just started the journey towards a new business. That's it. खाली टाइप दिखने का आपको. Just started the journey, right? Just started my journey. Towards becoming an entrepreneur or towards becoming a businessman. By default, people ask you which book, what book, क्या करते हो, क्या, what is this, every सब पूछेंगे लोग अपने आप को. उसके बाद आपको simple general method follow करना. That's it. I hope you're getting it. This method will go good with friends, not with strangers. This method is not good with strangers. वो लोग पूछेंगे नहीं आपको करते क्या हो. Why will they ask you? Because they don't even know you. This method will go with the good friends जो आपको जानते हैं, पहचानते हैं, या आपका जो status देखते हैं, या लोग आपसे स्टेटस देख के रिप्लाई करते हैं ना, वही लोग आपको रिप्लाई करेंगे इस चीज को देख के. उस तरह ऐसे ही होते हैं, लोग इग्नोर कर देते हैं, लोग शर्म करते हैं ना. हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, जो करेगा शर्म फूटे उसके कर्म. बात समझ नहीं आई? जो करेगा शर्म फूटे उसके कर्म. भाई वो एक बार पूछ लेता ना करते क्या हो, काश बंदे के लिए बदल सकती थी. वो बंदे कितना ईगो में था, बंदा शर्म करता था. बंदा कैसे पूछूं, क्या करके पूछूं, तो इतना शर्म किया, कर्म ही फूट गए उसके. ऐसा हो. तो कभी कभी पूछ लिया अगर सामने अच्छा रहेगा. ऐसा हो. बात समझ में आ रही है? That is called you should be ambitious. The people are ambitious, they'll definitely message you back. What is this, bro? What are you starting? क्या करते हो क्या आप? The people who are ambitious will definitely message you back. The people who are not ambitious, they'll just skip your status. They are the फालतू people. They are the waste people. ऐसा हो. That is got already got filtered out. तो हम लोग उनके लिए हम लोग कुछ और मेथड्स हम लोग अप्लाई करेंगे. Getting or not, guys? Right. So move on further with the fourth method. Any event pass method. ऐसा हो. These are the certain events passes जो आपके पास रहेंगे ना, passes. ऐसा हो. So this is called as any event pass. Example, if there might be something called as offline meetings. Offline meeting कुछ तरह. If you're meeting a person in Penthur, in for example you have went to a function or you have been to a college or on the bus side or like somewhere there where you meet your friend. ऐसा हो. You can just put your pass on your shirt front pocket, or you can just keep your pass in the bag or in the book. ऐसा हो. And as if you are kicking out in such a way that you're trying to hide it. आप ऐसा ओपन करो जहाँ के आप हाइड करो चीजों को. ऐसा हो. The friend person will definitely ask you, what are you hiding? वो पूछेगा आपका बेस्ट फ्रेंड, हाइड क्या कर रहा है भाई. ऐसा हो. ऐसा हो. Or if the people are not paying that much of attention towards you while hiding the things, what you need to do, you have to just take the pass, keep on the desk. Take the pass, put on the desk. As I told you the book, same way the guy will ask you, what is this? You don't know about this. वो बोलेगा तो, you really don't know about this. वो बोलेगा I don't know. Then leave, is not for you. ऐसा मतलब एकदम इग्नोर कर देने का. वो खुद पूछेगा क्या है भाई, पता क्या चीज है ये, इसके बारे में पता चल गया ना तेरे को, सही बोल रहा हूँ, जिंदगी बदलने वाली है तेरी. अब ऐसा जोश से बोलोगे ना, बोले हाई क्या बता, पर इसके ऊपर क्या लिखा है. Right, in the past always there will be a beautiful quote will be written over there. A beautiful quote will be written, right? You're one decision away to change your life. और कुछ ना कुछ एकदम जबरदस्त कोट लिखा रहता है. एक कोट पढ़ाने का बंदे को, वो बोलेगा यार ये तो बात है. एंड प्रेजेंटर नेम ऑल्सो विल बी रिटन. वो बोलेगा पता है कौन है बंदा ये, तो पता नहीं भाई. ये बंदा है ना, छोटी सी उम्र में इतने सारे काम कर चुका है कि जिंदगी खुद अपना जो भी सपने होते हैं सारे सपने पूरे कर लिया है. यू नो व्हाट, ये बंदा मेरे को भी हेल्प कर रहा है अपने सपने पूरे करने के लिए. एंड मेरे को बहुत लकी था कि इतने दिनों से कोशिश कर रहा था पास के लिए. फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, फाइनली भाई मिल गया पास मेरे को. अब तो मैं जा रहा हूँ इवेंट में, मजा आने वाला है. दैट इज हाउ यू विल बी लाइक टॉकिंग ओवर देयर. अब वो क्या बोलेगा भाई, जाके आना बोलेगा, भाई मेरे के लिए कुछ जुगाड़ करना, कुछ होगा, कुछ पॉसिबिलिटी है जुगाड़ की. ऐसा रिप्लाई करेगा बंदा आपके लिए. So just to get started, ki what exactly it is. Or else you might be having an old pass, a pass which is of long date. You just put on the table. What is this? वो बोलेगा पता नहीं आपको
yeah, one of the best event where I went over there, where I got to know about so many different things, and it was amazing. आप just खाली hype बनाओगे आप, so that your friend will ask you what happened in the event. Tell me, please, बता और ज़्यादा बता क्या क्या हुआ event के अंदर. The guy should ask you from a friend that what will happen in the event. Tell me, please. I'm very much excited to know that more in detail. And that is the moment he asks you what is this, all done. I hope you got. After the standard method comes into picture. I hope you're getting this. Any event pass. That was the fourth method. Or else now it is a trend of online trend. It was before, it was offline like this. We used to do it like this way in meeting the people, and we used to see that. Now it is online method called poster method. Kya poster? Example, we do so many meetings on online, Zoom meetings and so and so. And every meeting you get some poster. What you need to do? Openly put on your statuses, openly put on your WhatsApp stories, openly put in your Insta stories or Facebook stories. You know what? Somewhere the other person will definitely message you. What is this? From such so I've been observing you for last so many days. You've been promoting all this thing, meeting. Kya karte kya aap? So many posters, so many meetings. So I tell you, always do promote your meetings. Example, so I tell you, whenever you come for any meeting, do take a recording, do take a small clip of 30 seconds so that you can put it on Insta or on WhatsApp. Yes or no? So that people will see this guy is doing so many things. करता क्या बंदा ये? Daily meeting attend करता है, daily poster डालता है, startup with $0, training from this person, that person. करता क्या है बंदा? They will ask you from the friend. That is the moment. That is called event pass. Before we should do it offline, now you can do it online with the posters. Simple it is. Just the way of change, but the concept remains the same. ऐसा ना पहले ऑफलाइन करते आज ऑनलाइन करते, सिंपल सी बात. दिक्कत क्या है? मुद्दा ये है कि लोग पूछे आगे से पढ़ता क्या है, सिंपल सी बात. ऐसा ना. End of the day, the whole topic is the people from the friends should ask me, what are you doing? What do you do? What are you doing for it? करते क्या आप? That's it. The moment they ask me, I'm done with that. I hope you got the fourth method called as any event pass method. Yes or no, guys? So moving on further with the point number 5. Fifth method called have you heard something? बहुत मजा आने वाला है. Yes or no? So this method is applicable only when you are meeting a person face to face. तभी possible है ये. Yes or no? Right. Example, you are in a college or you are in a workplace or you are in some like function or something like that. You are a teammate is there. Example, you let me take an example of a college example. Me and one of my friend is there. We both are into Vestige and we're planning. Let me invite that person. हमने दोनों में decide किया कि let me invite a person called Y. A person called Y, X and Z is planning to invite a person called Y. Yes or no? They're thinking, but how to invite this person? What is the best way to, so that he can ask from the friend that what is this? Tell me. He should show more interest. Now we both of them will make a plan now, right? We'll make a plan. I'll go to the friend person. I'll ask him, have you heard something? क्या तूने कुछ सुना क्या? वो बोलेगा क्या सुना मैंने? मेरा एक और दोस्त बोलेगा, you didn't heard it. मतलब really तूने कुछ सुना नहीं? वो बोलेगा नहीं सुना मैंने. Then I will be telling, okay, leave. It's not for you then. एकदम इग्नोर करूंगा. Okay, leave. It's not for you. वो क्या बोलेगा? वो कंफ्यूज रहेगा, क्या हो गया ये? लोग क्या पूछ रहे, सुना क्या सुना मैंने? ऐसा no. Then either you can ask him a question. क्लास आते हो कि बंक करते हो खाली क्लास? पता हुआ कल क्या हुआ कॉलेज में? बोलेगा पता नहीं. Like this we can start with this. ऐसा no. I hope you got this. Right? ऐसा no. Have you heard something? वो बोलेगा no. You really didn't heard anything? वो बोलेगा no. Are you really coming to college or not? Is your mind is in the class only or like thinking somewhere about some special one over there, here or there? क्लास में हो ना, पता नहीं क्या हुआ क्लास में. वो बोले ऐसा हुआ क्या भाई, like what happened like this, so that you are like so thing. Then I'm completely ignoring. Okay, fine. It's not for you. It's only for the ambitious people. You are taunting him. You're hurting his ego, telling that he's not ambitious. तभी तो तेरे पता नहीं ना. ऐसा तो ambitious तो जाकर, if you have been ambitious, you would have got to know about this. But you're not ambitious. No, leave. It's only for the ambitious people. वो confused रहेगा. हुआ क्या ये? क्या हुआ क्या कॉलेज के अंदर? वो सबको पूछे हुआ क्या? या और if he will ask you, बताना हुआ what happened? That is the moment where you can get started with the standard method.
Yes or no? The moment the guy asks you what is this, your invitation done. Yes or no, guys? So बात समझ आ गया आपको? So this is a method called as have you heard something? Next method, moving on further with the sixth method called as ESBI method. This is a method goes good with employees. The people who are working some jobs, yes or no? This method works very good with that people, or the people who are into like क्या बोलते हैं, a self-employed, having a small scale business. If they're having a small scale business, this method goes them very well with them. They're thinking that key opening a small store or something like that. They think I became a businessman, but the reality is that they're still into S category called self-employed, not into business category. But they never know that. They think that if I'm having a small store means I become a businessman or I'm a successful person. No, sir, you are just a self-employed. You're not a businessman. Businessman is different, self-employed is different. There you're educating him by a method called ESBI rule. I hope in the last meeting I've already explained you in detail, I guess. Yes or no? Right. We are just putting a question mark over there. Right now we are into job. Our dreams is to become so and so. In this method, they are creating a mind of a person that why it is important to do business to achieve all your dreams. Itna hi wahan mudda hai. The main purpose that I should able to make him feel that why it is important to do business only to make your dreams come true. Business is a only platform which can make your dreams come true at the early age and it in a faster speed. Just by doing a job, you cannot achieve your dreams. Just by being a self-employed, you cannot achieve all your dreams. But the business platform can give you that. But it's not so easy to start a business. Then what can I do? क्या करना क्या है मेरे को? Then I understood that I need to come into business platform. Then only I can achieve all my dreams. But how to come business idea, investment, and experience required. Investment, idea, and experience. But I don't have that. Question mark. How can you become businessman then? There you'll be saying that I have an opportunity where zero investment, zero idea, zero experience, but still can become businessman. That is the moment where people will recollect their mind. Yes, let me look that. What exactly it is. वहाँ पे लोगों का mind बनता है कि हमें कुछ. You have to think about that. I hope you're getting this, guys. ESBI method. I'm not going to train you because you have already heard this many times in every CNT meeting. They explain this ESBI. कितने बार समझाएं? ऐसा हो तो आप already समझदार हो, आप already समझ चुके हो. सिर्फ खाली आपको दोबारा एक बार practice करें, आप खुद से बात करना है. That's it. Carry on, guys. So move on further with the step number 5 called good morning method. ये भी एक होता है good morning method. ऐसा हो. जैसे मान लो कि हम लोग like in the network marketing we follow a culture of good morning. ऐसा हो. Right. So maybe a friend is there who might be not knowing what good morning is all about. ऐसा हो. Right. Suddenly this method will go good when you are in a group of people where your 4-5 friends are going on together. क्या आप लोग साथ में चल रहे हो या आप लोग like hostel में हो या आप लोग PG में stay कर दो. When you're in a group of people, this method will go good whenever you are in a group of people. 3-4 लोग साथ में हैं. अब हमें invite करना है 3-4 लोगों को. क्या बोल के invite करो? एक साथ तो थोड़ी ना. हमें क्या करना उस समय we need to apply a method called as good morning method. Example, simply randomly you pick up a call. There's somebody called you or you have just pick up a call. You tell, yes sir, good morning sir. It is 4 o'clock in evening. मतलब आपका evening का 4 o'clock चल रहा है, 5 o'clock चल रहा है या night चल रहा है 10 बजे. आप बोल रहे good morning. सब लोगों की ध्यान आपकी तरफ आ जाएगा कि ऐसा no. People will drag their attention to those place where things are odd, different. ऐसा no. Wherever the things are different and odd, people will grab the attention of the people. Getting or not? तुरंत attention grab खो जाता है. ऐसा no. When you go to college in dhoti and kurta, will people not see you? When you go normally in jeans and t-shirt, nobody will see you. When you go in dhoti kurta, everybody will see you. ऐसा no. Because you are it's a quite different thing which is uncommon, like daily देखने नहीं मिलता. ऐसा no. That's like a special thing. Similar way, in afternoon 4 o'clock, in evening 4 o'clock, you told something called good morning. सब लोग देखेंगे भाई क्या बोल रहा है, good morning बोल रहा है ये, 4 बजे good morning बोल रहा है ये. ऐसा no. After that talk they'll ask you what happened, why it's evening you're saying good morning. Then you're telling yes it's good morning only. If right, if you know the concept behind why I said good morning, if you know
the concept behind why I said good morning. Even you start saying good morning from now onwards. Right? आपको पता चल, if you know, right, what is the concept behind good morning? मैंने क्यों good morning बोला? If you know that concept, after that even you start saying good morning from now onwards. Now he'll be thinking, what is that? What is the concept? By default, the guest will ask you, what is the concept? What is the concept? Yes or no? Then you'll be creating a proper value. By means, I can tell you, but I don't think you can start saying good morning from now onwards. वो बोलेगा क्या मजाक कर रहा है? ऐसा ना, यही तो बात है. क्योंकि आप एक स्टैंडर्ड मेथड फॉलो करो, वहां से अपने आप वो बंदा अपने आप के साथ कनेक्ट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट. ऐसा ना, वो बोला गुड मॉर्निंग, वो बोला क्यों गुड मॉर्निंग बोला, राइट? If you know the concept, why if you know the concept behind why did I say good morning, even you start saying good morning from now onwards. Then you'll be creating a proper value about that, and you're gonna go with the standard method. That's the method of good morning, where people will ask me, what is this? Do something uncommon that people will ask you, what is this? Simple. That's called invitation. Different method, different people will apply different method. I hope you got this, guys. So moving on further with the point number 8, called placement method. Some people are there in your college, they are born placement like anything. Placement की जान होती है, ऐसा हो. खाना मिले ना मिले, placement मिलना चाहिए. Whatever they are doing, they're just doing for the placement. They're writing assignment for placement. They are writing homework for placement. They're writing exam for what? For placement. सब कुछ उनको placement चाहिए. इसे बोलते हैं ना, like in old movies ऐसी ना, like इंसान की जान तोते में होती है, उसी तरह से स्टूडेंट की जान होती है प्लेसमेंट के अंदर. प्लेसमेंट ना मिले लोग मर जाते हैं, प्लेसमेंट मिल गया तो लोग they feel like I'm on the top of the world. Yes or no? I hope you can connect with me with this. All the students can connect with me with this. Yes or no, guys? So end of the day, why are we studying? End of the day, we want placement. So only we are studying. Yes or no? और कुछ नहीं, हमें प्लेसमेंट चाहिए, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं. ऐसा no. End of the day, we want placement. We want to earn money and we want to become successful. Simple it is. The simple logic is this. Simple way. Here you'll be creating a proper value and you'll be asking some few questions to him, where you'll be recorrecting his mind that you should do something. Example, are you sure about your placements? पहले ऐसा रहेगा. Are you sure about your placements? वो बोलेगा yes, pretty sure. ये करके वो हाइप बनाएगा. ऐसा no. If he's confident, वो एकदम confidence की बात करेगा. A person is confused now, no bro, what placement is very tough. करके वो खुद whether is negative about that, whether it is demotivated about that, or whether it's positive about that, you can just ask, by asking his question, you can get to know his opinion about placements. इसके माइंड में क्या चल रहा है प्लेसमेंट को लेके? Is it right? Is he motivated about the placement, or is it like completely demotivated about that? First question, are you sure about the placement? वो बोलेगा yes or no, that depends on him, that person. Second thing, tell me, if वो बोलेगा yes, ask him what are the requirements to get placement? What are the different things required to get placement? What are the requirements? He'll tell, I need to have some marks, I need to have this, that, I need to have skills and all. वो सब बोलेगा. In case if you didn't, he told just marks is enough, bro. Once if I get a marks, then placement ready. No. That moment you'll be telling him that apart from marks, skills are required, this required, that required, सब बोलोगे, recorrect करोगे आप mind. And last question you're gonna ask him, do you have the required skills? क्या आपके पास वो required skills हैं आपके पास? Majority people will tell no, I don't have it. Yes or no? Then fourth thing, how will you improve then? क्या करोगे improve करने के लिए? If some people tell I don't have. Some people meant I have a bit, but I'm not so well versed. Yes or no? Then how will you improve it? बोलेगा yes, I have to do something for that. Then at last, yeah, how will you improve it? वो बोलेगा yes, I should do something different. I should do something extra. Then you'll be putting up a message that I already started doing something to get placement. I already started working on it. So and so. उसके बाद standard method will go on. They're just creating a person mind so that he can ask me what should I do. करना क्या है मेरे को? या करते क्या हो आप? If that much, if I'm able to get from him, then I'm done with that. Yes or no, guys? बात समझ आ रही आप लोगों को? Did you got this placement method? This is the common method with the people who are very पढ़ाकू लोग बोलते हैं ना, like जो लोग एकदम like कुछ भी हो जाना यार प्लेसमेंट चाहिए मेरे को, let it be anything, I want placement. वो like वो हर लम्बे कुछ भी करे प्लेसमेंट के लिए कर रहे हैं.
the people are nerds or the people who are like bookworm, they are these people only, they want placement, they want. उनका placement ही उनका benefit होता है. And you're showing a benefit, how to get it done, the benefit. They'll come and hug you. ऐसा हम करेंगे. Thank you so much for saying all this thing. वो आपको एकदम गले लग जाएगा आपके. Because आपने उसकी मुद्दे की बात बता दी ना. This is the method called 8 method. So we went further with the 9. Acha. So apart from this 8 methods, some more methods are there which I'll be telling you. Some more methods are, one more method is called as a opinion approach, opinion method. This method will go good with the elderly people. Example, your anger, but yeah, some elder, your uncle is there, your aunt is there, or some elder people are there. Yes or no? Right. So this method will go good with that people, called as a opinion approach. You're not inviting him for the presentation, but actually you're doing a presentation for them indirectly. Example, you're having your uncle who is well educated and well known in the family. Yes or no? You called him. Hi uncle, how are you? Everything spoke. Uncle, I was just thinking to do something new and a different thing. Before I start something, I thought to take your opinion. मैं लगता है कि पहले कुछ भी पहले करने के पहले एक बार आपकी राय ले लूं, आपसे एक बार मशवरा कर लूं या आपसे एक बार आपकी ओपिनियन ले लूं. ऐसा नो. अंकल के मन में फूटा लड्डू एक. अंकल बोलेंगे अब तक तो आई वाज थिंकिंग आई एम द वर्ल्ड स्मार्टेस्ट पर्सन, नाउ अदर पीपल आल्सो थिंक दैट आई एम स्मार्टर नाउ. ऐसा नो. अब आप पूछोगे अंकल कब आके मिलना है, वो बोलेगा छोड़ी कल आना परसों आना, देखेंगे हुआ तो मिलेंगे, छोड़ देंगे, ऐसा बोलेगा. ही विल बी ईगरली वेटिंग यू. ऐसा नो. वो बोलेगा आ जाना रात में. ऐसा नो. राइट. अब जाओगे वहां पे, जाके बैठ के अब प्लान दिखाओगे डायरेक्टली. यू विल बी डायरेक्टली शोइंग ऑल द प्रेजेंट. यू आर एक्चुअली शोइंग अ प्लान टू हिम, राइट, एज इफ यू आर एक्सप्लेनिंग हिम दैट आई एम planning to do something like this, and indirectly you told the plan. If that your uncle liked the plan na, he will tell you yes, of course, it's absolutely right that you can start with. Uncle, should I start alone or will you start along with me? Directly पूछ देना. ऐसा नो. वो खुद बोलेगा चल मिलके करते हैं, कुछ ना हो जाएगा जुगाड़. अल्टीमेटली आपका पीपीटी हो जाएगा वहां पे. Getting now, that is called as an opinion approach, जहाँ पे आप लोगों का opinion ले रहे हो, तो by default people are coming ahead and people are like feeling good that you actually appreciate them. ऐसा लोग अपने अच्छा मानेंगे. That's called one more method is there called 9 method, and one more method is called as a 10th method है ये वाला, जहाँ पे आप पूछते हो लोगों से. One second guys. Example, you're having a friend, you want to invite him. You tell this method called as me and my friend has started some e-commerce business. Do you know any of your friends would be interested to be a partner of us? इतना ही बोलोगे आप. ऐसा नो. Me and my friend has started a e-commerce business. ऐसा नो. Do you have any people, ambitious people in contact where they would like to be a partner with us? वो बोलेगा बगल में छोरा गली में ढूंढारा. भाई लोगों की हटा बाजू, पहले मेरी तो सुन, मेरे को पहले बता क्या चीज है. ऐसा नो. Getting on guys, बात समझ आ रही है आप लोगों को? That is called one of the method called where you can just tell a friend that ki I'm not interested in you. Do you know somebody who is better than you? वो बोलेगा बाजू हटा लो, मेरे को पहले बताओ. वो अपने खुद बोलेगा मेरे को बताना. That is called indirectly telling people. Getting out guys. तो बात समझ आ रही है आप लोगों को? So that was one more method is there. एक और रहेगा आपका excitement approach रहेगा. एक आपका रहेगा opinion approach. एक आपका रहेगा कि do you know somebody who are willing to make some extra money. ऐसा सारे चीजें रहेंगी. Tomorrow I'm gonna start with because I have not prepared a document on this topics. I'm just remembering a few methods, so I just told you randomly. But tomorrow I'm gonna tell you about this method in detail when I'll be writing the notes and I'll be coming up where I'll be sharing my screen with you, and in detail I'll talk about this topic. Till now, in the last 8 methods, if you have any doubts, you can ask me.
अब तक के 8 methods में, if you have any doubts in this 8 methods, you can ask me. If anybody has any doubt in this last 8 methods I discussed with you, if you have any doubt out of these 8 methods, you can ask me now so that we can clear the doubts. If no doubts are there, I'm going to make you watch a small clip. If no doubts are there, I'll be making you watch a small clip. In that clip, you'll understand the value of why it is important to write. If anybody has doubt, do put a doubt in the chat box. If no doubt, put as no doubt so that we can move on further. If doubt, type as doubt. If no doubt, type as no doubt so that we can go further. Yes, I think nobody has any doubts. I think so. Second and third and sixth method doubt. Noor Aishaji. Okay, Aishaji, I'll unmute you and I'll unmute you. You can just ask me what doubts आपके लिए. Sir, you can just give me a backend support. आप Noor Aishaji unmute कर दोगे please. Sir, our co-host Yaqub ji can just unmute Noor Aishaji. She has some doubt on second method. चलो भाई अनम्यूट कर देता हूँ. I just got her. Yes, Noor Aishaji, can just get started. Sir, second and third, you have doubts, sir. Once again, explain, sir. No explaining. You asked me what doubt you have. Let me talk on the specific topic. अभी तो मैंने I was not able to hear that point, sir. I was not able to hear that one, sir. So. अब ऐसा पूछे तो सब लोग पूछेंगे ना सर. मेरा भी इंटरनेट कनेक्शन वीक से समझ नहीं आया. फिर दोबारा रिपीट करो. उसी तरह से बार-बार रिपीट करना पड़ेगा सारे 10 मिनट में. No, sir. Just one. Just one, sir. What was the second method? Second method was, I think, that PMF card method, right? Second method था हमारा yes PMF card method. This is a long topic. It will take me around 10 minutes to explain in detail about this PMF card method. Yes or no? So you can do one thing, anything. Anyways, we are recording this session. WhatsApp to the recording. You can just just watch the recording again. Okay? Okay, sir. Okay, sir. Anybody else? Any doubt? Second method again. No point of repeating the methods again. I already told you. You should be paying more attention for listening. Yes or no? Or just watch the recording once again. Simple. So I hope nobody has any doubts now. I'll just make you play one small clip. ये clip देख लेना आप लोग और आपको अच्छी clarity मिल जाएगी कि what exactly I'm trying to convey to you. Always I'll be telling that what you tell is not important. ये करके अब आप feel कर पाओगे आज. Is my screen visible to all of you? Is my screen visible, guys? Yes. It's in Hindi, right? So the people who are known well in Hindi, they can understand this video because it's a video in Hindi itself. Yes, let's get started now. आपको सोचने में लगता है कि शायद वो इस बिजनेस में ना आए. अगर मैं इनसे बात करूं, चौथा कदम जो 15 मिनट का वीडियो एकदम ध्यान से देख लेना. चौथा कदम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनविटेशन, यानी कि लोगों को आमंत्रित करना है, उनको इनवाइट करना है ताकि वो आके हमारे बिजनेस को देख सके, इस बेहतरीन प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी ले सके, जो फायदा आप और लाखों लोग पा रहे हैं, आपके जान पहचान के लोग भी उन प्रोडक्ट्स का फायदा ले सके और बिजनेस में आके अपनी जिंदगी बना सके. हमने करना है ये चौथा कदम, यानी कि उनको इनवाइट. लेडीज एंड जेंटलमैन, जो हम आर्ट ऑफ इनवाइटिंग की बात कर रहे हैं, जब हमने अपने लोगों को इस बिजनेस में इनवाइट करना है, आमंत्रित करना है ताकि वो हमारी मीटिंग में आए, क्योंकि इतनी बेहतरीन बिजनेस और जो मार्केटिंग प्लान हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे उनको फायदा हो, तो हमने उनको आमंत्रित कैसे करना है. इसके अंदर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा ये 5 C's ऑफ इनविटेशन की वो 5 चीजें आर्ट ऑफ इनविटेशन में कौन सी होनी चाहिए. इनके बताने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि एक चीज, एक लाइन, एक जिसने मेरे को बहुत प्रभावित किया था, एक सेइंग. जब मैं कॉलेज में था तब मैंने उसको पढ़ा था
उसके अंदर एक बहुत साधारण चीज कही गई थी कि एक डिप्लोमैट, a diplomat is a person who can tell you to go to hell in such a manner that you actually look forward to the trip. यानी कि एक डिप्लोमैट वो व्यक्ति होता है जो अगर आपको ये भी कहे कि भाड़ में जाओ, पर उसके कहने का अंदाज इतना बेहतर हो कि आप सोचना शुरू कर दें कि मुझे भाड़ में जरूर जाना है। अगर आपकी जुबान में मिठास होगी और आपके कहने का अंदाज बिल्कुल अलग होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि लोग आपसे प्रभावित ना हो और आपके बुलाए हुए वो आएगा। चलिए बढ़ते हुए अगली स्लाइड के ऊपर कि 5 C's ऑफ इनविटेशन में सबसे पहली कौन सी चीज है। सबसे पहला जो हमने इस बिजनेस के अंदर करना है इन आर्ट ऑफ इनवाइटिंग के अंदर कि नंबर 1 कन्वर्सेशन यानी कि लोगों से हमने बातचीत किस प्रकार से करनी है। किसी भी व्यक्ति को जब आप इस बिजनेस में आमंत्रित करना चाहते हैं, इनवाइट करने से पहले एक चीज सोच ले, क्या कि आप किस प्रकार से कहते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप क्या कहते हैं। मैं इसको फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा आपके फायदे के लिए कि आप किस प्रकार से कहते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कैसे कहते हैं। कि एक अच्छा स्माइल, हंसमुख चेहरा और जोश आपको अच्छे वर्ड से ज्यादा ही बेनिफिट और फायदा देगा। राइट? जब भी आपने लोगों से बात करनी है, इमीडिएटली ये मत करिए अरे सर बढ़िया कमाल का बिजनेस है, आप आइए मीटिंग के अंदर, आपको हम दिखाना चाहेंगे। लोग शायद उसमें घबरा जाएं कि आप जब उनको बुला रहे हैं शायद आप ही का फायदा है, तभी आप उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हर व्यक्ति को जब आपने बात करनी है, एक चीज पहले आप उनके बारे में जानकारी हासिल कीजिए। जानकारी उनको एक बताना बहुत जरूरी है कि हमें आपके अंदर रुचि है। अगर आप उनके अंदर रुचि लेंगे तभी वो आपके बिजनेस के अंदर रुचि लेंगे। उसके लिए डिस्कस करिए जो हम एक चीज सुझाव देते हैं, फॉर्म का FORM। F का मतलब फैमिली यानी कि परिवार। कभी किसी व्यक्ति से फोन पे बात करें या उसको जाके आमंत्रित करना है तो पूछिए और सर क्या हाल चाल है, अर्जुन जी ठीक ठाक, आपके परिवार में कैसे हैं, माता जी ठीक है, बच्चे कैसे हैं, उनके बारे में पहले जानकारी लीजिए। उसके बाद O यानी कि ऑक्यूपेशन, व्यवसाय, वो जो काम करते हैं। अगर कोई आदमी बिजनेस कर रहा है तो और बिजनेस कैसा चल रहा है, मंदी का आपके ऊपर कोई असर तो नहीं पड़ा, ये त्योहार का मौसम आ रहा है या कोई भी हो, उसके बारे में, व्यापार के बारे में पूछिए। अगर नौकरी कर रहा है तो नौकरी कैसे चल रही है, अगली तरक्की कब हो रही है, आपका बॉस कैसा है। ये बहुत बेहतरीन सवाल है क्योंकि कोई व्यक्ति अपने बॉस से प्यार नहीं करता और वो शायद आपको मौका दे ताकि आप इस बिजनेस में आमंत्रित कर सकें। R का मतलब रिक्रिएशन। और आजकल क्या हो रहा है, बच्चों की छुट्टियां आ रही हैं या नई पिक्चर रिलीज हो रही हैं, नया टीवी आया है, क्या आपने खरीदा, इन चीजों के बारे में जब आप बात करें, लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे महत्वपूर्ण चीज के ऊपर आपने जरूर लेके जाना है, यानी कि M का मतलब क्या, मनी। और आपसे बात करते हुए ख्याल आया कि एक बहुत अच्छा बिजनेस का मौका आया है, क्या आप कुछ बिजनेस और करने में इंटरेस्टेड होंगे? लेडीज जेंटलमैन, अगर व्यक्ति कहता है हाँ, तभी उसको आमंत्रित कीजिए, अगर ना तो वेरी गुड, उसको हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए, यानी कि वो हमारे कंज्यूमर बने। लेडीज जेंटलमैन, ये पहला तरीका है कि लोगों के साथ आपने कन्वर्सेशन कैसे करनी है, यानी कि वार्तालाप कैसे करना है। लेडीज जेंटलमैन, दूसरे पॉइंट के ऊपर जाते हुए, यानी कि आर्ट ऑफ इनवाइटिंग के अंदर जो हमारा दूसरा C होता है, कॉम्प्लीमेंट यानी कि प्रशंसा। जब भी आप लोगों से बात कर रहे हैं, जब भी आपको मौका मिले, जब आप उनसे बात कर रहे हैं कि आपके परिवार में कैसे हैं, माता पिता ठीक हैं, बच्चे ठीक हैं, बच्चों के एग्जाम्स कैसे गए, O यानी कि ऑक्यूपेशन, आपका व्यवसाय कैसे चल रहा है, नौकरी कैसे चल रही है, रिक्रिएशन, छुट्टियों में कहीं गए, नई पिक्चर देखी या कुछ ऐसा किया। जब आप इन चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं, जब भी आपको मौका मिले प्रशंसा करें। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी भी व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं तो उसको अच्छा लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आज आप मेरी प्रशंसा करें कि मैं काफी अच्छा लग रहा हूं, मेरे कपड़े अच्छे लग रहे हैं, मेरा चेहरा अच्छा लग रहा है, जब आप कहेंगे, आप घर में बैठे भी कहेंगे, तब भी मुझे सुनाई देगा और मुझे खुशी होगी। इसी प्रकार से हर व्यक्ति को जब आप उनकी प्रशंसा करें तो उनको अच्छा लगता है। अब किस प्रकार की प्रशंसा हम कर सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर से, अगर कोई व्यक्ति बात कर रहा है, वो कह रहा था कि यार मेरे परिवार में माताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं उनको हॉस्पिटल लेके गया, ये था, टेस्ट कराए, तो आप उनकी प्रशंसा कर सकते हैं, यार आप सच्ची मुच्ची एक बहुत बढ़िया बेटे हैं,
जो अपने माँ बाप का कितना ख्याल रखते हैं। कोई व्यक्ति अगर कोई बात कहता है, बात करते हुए मैंने उसको ऐसा कहा, तो उनकी प्रशंसा आप कर सकते हैं कि यार आप काफी समझदार हो। इतना ही नहीं कि कोई व्यक्ति अगर कहता है जब मैंने बात की तो लोग मेरी बात सुन रहे थे, अरे सही बात है, आप जब बात करते हो तो लोग आपकी बात पर ध्यान देते हैं। अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा मेहनत करता है, उसको उसकी प्रशंसा करें कि अरे यार आप बहुत ही ज्यादा मेहनती हो। लेडीज जेंटलमैन, एक चीज का ख्याल इसमें जरूर रखना है कि प्रशंसा हमेशा सच होनी चाहिए। अगर आप किसी की झूठी प्रशंसा करेंगे तो उसको इमीडिएटली पता चल जाएगा। जो एग्जांपल मैं जर्नली ट्रेनिंग में देता हूं कि अगर आप कई बार आपके साथ भी होता है, किसी व्यक्ति से कहो अरे आज तो बिल्कुल हीरो लग रहे हो, वो आपको दूसरा लफ्ज क्या बोलता है, अरे क्या बात आज सुबह से कोई मिला नहीं। यानी कि उसको भी पता है कि कौन सी प्रशंसा सच और कौन सी झूठी है। पहला कौन सा कि लोगों से हमने वार्तालाप कैसे करना है, कन्वर्सेशन। दूसरा लोगों को कॉम्प्लीमेंट देना है। पर तीसरा सी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अगली स्लाइड के ऊपर जाके, क्यूरियोसिटी। यानी कि जब हम लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, हमने उनकी जिज्ञासा बढ़ानी है। हमारा पर्पस, हमारा मकसद क्या है कि लोग हमारे मीटिंग में आए, हमारे बिजनेस के बारे में ज्ञान लें, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में ज्ञान लें। इसके अंदर काफी अप्रोच यानी कि तरीके जो हैं हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं वो कौन सा है, एक्साइटमेंट अप्रोच। एक्साइटमेंट यानी कि आपने इस बिजनेस को देखा, आपने प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी ली, आपको बहुत अच्छा लगा और उस जोश के साथ ही, एक्साइटमेंट के साथ ही आप लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। आपको याद होगा कन्वर्सेशन में मैंने आपसे क्या कहा था कि लोग कैसे कहते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कहते हैं। जो आपके सामने यहाँ पे दिखाया जा रहा है एक्साइटमेंट अप्रोच में, क्या कि रमेश आप मानोगे नहीं कि मैंने एक ऐसा बिजनेस के अंदर जुड़ा हूं जहां पे लोग एक महीने में इतना कमाते हैं जो लोग एक साल में नहीं कमा सकते। क्या आप मिलना चाहोगे शनिवार शाम को 6 बजे ताकि आपको हम बता सकें। ये जो चीज बताई यानी कि एक्साइटमेंट अप्रोच, फिर से कन्वर्सेशन के अंदर जाके मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कैसे कहते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कहते हैं। जब आपने एक्साइटमेंट अप्रोच करनी है तो इसके अंदर आपका भाव भी इस प्रकार से आना चाहिए कि आपने बिजनेस को देखा, आपके अंदर आग लग गई, इमीडिएटली आपने जोश के साथ उसके बारे में बता रहे हैं। तो कहना कैसे है कि रमेश यार तुम मानोगे नहीं, मैंने एक ऐसा बिजनेस देखा है जिसके अंदर लोग एक महीने के अंदर इतना कमाते हैं जो लोग एक साल में नहीं कमा सकते। क्या हम मिल सकते हैं शनिवार शाम को 6 बजे ताकि आपको डिस्कस कर सके। ये आपने जोश से कहा, एक्साइटमेंट से कहा। फिर से ये आप कैसे कहते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कहते हैं। अगर आप कहें सही लफ्ज पर आपके कहने का ढंग अलग हो तो लोग आपसे प्रभावित नहीं होंगे और आपके इस बिजनेस को देखने नहीं आएंगे। उदाहरण के तौर पे जो एक्साइटमेंट अप्रोच के शब्द जो मैंने अभी बोला कि रमेश आप मानोगे नहीं कि मैंने एक ऐसा बिजनेस देखा है, अगर उसको जोश के ऊपर ना कहते हुए आप कहें कि रमेश यार तुम मानोगे नहीं, मैंने एक ऐसा बिजनेस देखा है जिसके अंदर लोग एक महीने में उतना कमाते हैं जो लोग साल में नहीं कमा पाते। क्या हम मिल सकते हैं शनिवार शाम को 6 बजे। लेडीज जेंटलमैन, लफ्ज वही, कहने का अंदाज अलग, यही चीज सबसे ज्यादा फर्क डालता है। क्यों? क्योंकि आप कैसे कहते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कहते हैं। पहली तो हमारी एक्साइटमेंट अप्रोच यानी कि जोशीला उपगमन। दूसरा डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच यानी कि सीधा उपगमन, लोगों को डायरेक्ट अप्रोच आपने जो करना है उसके अंदर आपने इस्तेमाल करना है उन लोगों के लिए जो आपके खास मित्र हों, जिनके ऊपर आपको साफ लगता है कि वो इस बिजनेस में आएंगे जरूर क्योंकि आप कहते हैं। इसके लिए आपने साफ इस्तेमाल कर सकते हैं, सुशील मैंने एक बिजनेस शुरू किया है जिसके अंदर मैं चाहता हूं आप भी आके उसके अंदर जुड़े, तो क्या हम मिल सकते हैं शनिवार शाम को 6 बजे। डायरेक्ट अप्रोच यानी कि आपने डायरेक्टली उनको बुलाया कि हम जिस बिजनेस के लिए आपको जोड़ना चाहते हैं उसी को दिखाने के लिए बुला रहे हैं, यानी कि उसके दिमाग में एक धारणा हो जाए कि उसको जाके उसको ज्वाइन करना है। लेडीज जेंटलमैन, क्यूरियोसिटी को बढ़ाने का अगला तरीका हु डू यू नो अप्रोच, यानी कि क्या आप किसी व्यक्ति को जानते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जिनको आपको सोचने में लगता है कि शायद वो इस बिजनेस में ना आए,
अगर मैं इनसे बात करूं तो शायद इनकी धारणा मेरे बारे में कुछ अलग ना हो। अगर आपके मन में अभी ये शक है तो आप ये वाला तरीका अपना सकते हैं कि अरे मैंने एक बिजनेस ज्वाइन किया है जिसके अंदर बहुत अच्छी आमदनी है, क्या आप किसी व्यक्ति को जानते हैं जो एक्स्ट्रा आमदनी चाहता हो? अगर वो कहता है हाँ, तो उस व्यक्ति का नाम लीजिए। पर ज्यादातर होगा ये कि वो कहेगा बाकियों की बात छोड़िए, मैं खुद कमाना चाहता हूं, मुझे बताओ क्या है। तो उनको कहिए कि क्या हम मिल सकते हैं शनिवार को 6 बजे। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके बाद अगला स्टेप लोकेशन, कि अपने दोस्तों से, जान पहचान के व्यक्तियों से जब आप मिलते हैं, उनको जब आप आमंत्रित करना चाहते हैं कि अरे यार मैंने एक बिजनेस शुरू किया है जो पूरे देश भर में है, बढ़िया चल रहा है, आपके शहर में हम इसको शुरू करना चाहते हैं, तो क्या आप इस बिजनेस में शामिल होना चाहेंगे? इसकी जानकारी के लिए क्या हम मिल सकते हैं शनिवार शाम को 6 बजे? लेडीज जेंटलमैन, ये एक तरीका है जिसके करके आप इनवाइट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो जिज्ञासा यानी कि क्यूरियोसिटी बढ़ाने का जो तरीका हम इस्तेमाल करते हैं अपने इस बिजनेस के अंदर, जिसके अंदर बेहतरीन हमारे सबसे बड़े बड़े लीडर्स सब इसको इस्तेमाल करते हैं, वो होता है ओपिनियन अप्रोच। ओपिनियन यानी कि व्यक्ति का राय लेना, यानी कि उसका विचार क्या है। ये तरीका हम ज्यादातर उन लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो सोचते हैं कि दुनिया में सबसे अक्लमंद आदमी कौन? मैं। जो व्यक्ति अपने बारे में बहुत ज्यादा बड़ा सोचता है, उस व्यक्ति के ऊपर ये तरीका आप अपना सकते हैं कि यार मैंने एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, मैं चाहता था कि आपकी अगर सलाह मिल जाती तो मैं इस बिजनेस को शुरू करूं कि ना, ये आपसे राय लेनी है। तो क्या हम मिल सकते हैं शनिवार शाम को 6 बजे? इस केस में व्यक्ति जरूर आएगा, वो कहेगा अच्छा मेरी राय लेना चाहता है, अरे मैं तो खुद ही सोचता था कि मैं बहुत अक्लमंद हूं, अब तो पूरी दुनिया मानती है मैं अक्लमंद हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये थे हमारे तरीके जिसके करके क्यूरियोसिटी बढ़ा के हमारा थर्ड सी हम लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। चलते हैं अगले सी के ऊपर, यानी कि कंट्रोल। कंट्रोल यानी कि नियंत्रण की। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्साइटेड मत हो जाइए। लोग जब बात करते हैं लोगों से कि क्या मिल सकते हैं शनिवार शाम को 6 बजे, वो व्यक्ति कहता है हाँ हाँ मैं जरूर आऊंगा, तो हम कहते हैं अरे आने के लिए तैयार हो गया? अच्छा ऐसा करना, आती बारी अपने साथ 2 और दोस्तों को ले आना। तो उसके मन में शंका पैदा होनी शुरू होती है। आप कंट्रोल यानी कि नियंत्रण रखिए। तो लोग आपसे जब लोग के सवाल पूछते हैं शनिवार शाम को 6 बजे, हाँ मैं आ जाऊंगा, पर किस लिए? जब वो पूछे किस लिए, उनको कहिएगा कि ये पूरा का पूरा हम बताएंगे आपको मीटिंग में। अगर आपको कहते हैं अरे कुछ तो बताओ, उनसे कहिए कुछ क्यों बताएं, अरे भाई साहब पूरा बताएंगे ना शनिवार शाम को 6 बजे। अगर वो कहे थोड़ा सा, तो थोड़ा सा क्यों, सारा सा। कब? शनिवार शाम को 6 बजे। लेडीज जेंटलमैन, हम इसलिए कहते हैं ताकि आप उनको मीटिंग में इनवाइट कीजिए। क्यों? क्योंकि फोन पे अगर आप या किसी को थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे तो शायद वो व्यक्ति पूरा ना समझ सके और एक धारणा अपने मन में रख के और उस मीटिंग में ना आए। अगर वो आपके बहुत पीछे पड़ते हैं, अरे नहीं नहीं कुछ तो बताइए, तो एक बेस्ट तरीका क्या है उनको बताने का? सुनिए, क्योंकि मैंने इस बिजनेस को अभी शुरू किया है, आपके मन में बहुत ऐसे सवाल होंगे जिनका जवाब शायद मैं ना दे सकूं। जब आप शनिवार शाम को 6 बजे मीटिंग में आएंगे, हमारे वहां पे ऐसे इतने तजुर्बेकार लोग होंगे जो पिछले 5 साल से इस बिजनेस को कर रहे हैं। आपके हर एक सवाल का उत्तर वो पूरी अच्छी तरह से दे सकेंगे ताकि आपको वो बिजनेस पसंद आए। लेडीज जेंटलमैन, ये हमारा तरीका है इनवाइट करने का। इसके अंदर जो लास्ट सी है वो कौन सा है? कमिटमेंट। कि जब आप लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, उनसे कमिटमेंट यानी कि प्रतिबद्धता लीजिए। तो सर हम आपसे मिल रहे हैं शनिवार शाम को 6 बजे। अगर वो कहता है मैं देखूंगा नहीं, कि सर पक्का बताइए। अगर आपने कैंसिल भी करना हो, मुझे कम से कम 2 दिन पहले बता दीजिएगा। क्यों? क्योंकि उसकी अगर आप ना आ सके तो आपकी जगह मैं और किसी व्यक्ति को ले जाऊं ताकि मेरे समय भी बर्बाद ना हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर उनके पास कमिटमेंट होगी और आपने उनसे जब बात करने का तरीके में पक्का कहा है कि हम आपसे जरूर मिलेंगे और समय से पहले ही मैं पहुंच जाऊंगा ताकि आपके लिए एक सीट रिजर्व रखूं, तो वो व्यक्ति जरूर आएगा। गाइज आई होप यू गॉट दिस नाउ, राइट? आई थिंक आप लोगों को आज ये समझ आ चुका है कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स नाउ।
All right, so that's a video available in the YouTube, and I can watch to the video as well. And I think now you actually got the way. I talked about rules, mistakes, and some few 8 methods, and also I gave you the general method. In this Gautam Balisa video, you learn. I said, na, it is an invitation, not explanation. He told you directly. Control. Don't overexcite and tell everything. As on control. That's what they told you. And also they told you taking commitment, confirming the invitation and taking the reconfirmation of the appointment is damn important. Or else the people will just tell something and they'll just back out and you'll be in a trouble. Yes or no? So your invitation will fail over there. Tomorrow we'll discuss the more remaining methods and also we'll discuss the general method of invitation. Yes or no, guys? So that's it for the day. Thank you so much. And let me see at last how many people stayed back. 44 people. So 44 only at the actual trainers were staying back with us for a long time. Rest of them are just like Hawa ka jhoka hai wo. Yes or no? Right. So 45 trainers are there with us. Right. So all the very best, guys. So as I told you, your opponents are going to take mock of you. Start preparing well, and your opponents are going to take a mock of you. Yes, so get ready for your mock sessions and get ready for preparation, everything, and things are going to get all right. Okay. Thank you so much. See you tomorrow with 9 p.m. with some new invitation methods. As I told you, it's a topic of 3-4 days. 2 days are done. Tomorrow it might come. It might finish or it might finish the next day. It might take another like 1 or 2 days. It depends, right? Depends on the methods. Thank you so much, guys. All the very best. See you tomorrow, sharp 9 p.m. All the best. See you. Wish you well.